Good morning, students, and welcome to the class today. And in this lecture, we are going to study about atropine and its isolation. And here are the contents: introduction, natural sources, structure and properties, chemistry and pharmacology, application, laboratory synthesis, biosynthesis, and isolation. Introduction. Atropine is a tropine alkaloid extracted from deadly nightshade Atropa belladonna, Jimson weed, Dhatura starmonium, mandrake, Mandraga gora officinanum, belonging to family Solanaceae. Okay, so this is from where you can get atropine from Atropa belladonna, Dhatura starmonium, Mandragora officinanum, and these all plants belong to the family of Solanaceae. It is a secondary metabolite of these plants and serve as a drug with wide variety of effects. है ना? ये बहुत प्लांट सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है प्लांट का जो इट हैज अ वाइड वैरायटी है ना और इसके बारे में बहुत सारी इसकी बैक स्टोरीज है एट्रोपा की बट इट इज कॉल्ड डेडली नाइटशेड इसलिए कहा जाता था एट्रोपा को बिकॉज देयर इज अ स्टोरी कि रोमियो एंड जूलियट स्टोरी यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट एंड दैट इन द हिस्ट्री इट इज कंसिडर कि जब जो जूलियट की डेथ हुई थी वो इसको खाने से हुई थी तो दैट्स व्हाई इट्स नेम एज डेडली नाइटशेड है ना एंड इसके अलावा बाकी और भी बहुत सारी इसकी हिस्ट्री है व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द ड्रग फॉर नाम जो दिया हुआ बेलाडोना वो नाम क्यों पड़ा हुआ है इसका ओके बेला इज अ गर्ल एंड डोना इज आईज एंड जो ब्यूटीफुल आईज का एक शेप है स्लीव का और ब्यूटिफिकेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता था ओके competitive antagonist for the muscarinic and acetylcholine receptor classified as anticholinergic drug. Atropine is core medicine in the World Health Organization essential drug list, which is a list of minimum medical needs for the basic healthcare system. Other names of atropine are DL-hyoscine, DL is dextroliboratory hyoscine, tropic acid ester with tropine and tropate, tropate. These are the dextroliboratory combination. Natural sources. Atropine is found in many members of Solanaceae family, most common found in Atropa belladonna, Dhatura starmonium, Dhatura inox, Dhatura metal, and other sources are Burgomycia, Hyoscine, genera, etc. स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी सिस्टमेटिकली इसको आईपीएससी नेम दिया हुआ है वो है 8 मिथाइल 8 एज अ बायोसाइक्लो oct 3 3 hydroxyl 2 phenyl propanate molecular formula of C17H23 NO3 molecular mass of 28.38 gram mole inverse physical property atropine is low soluble in water 1 gram atropine dissolved per 2 ml of alcohol. Physical state, white crystalline or white crystalline powder, odorless and has a sharp bitter taste. Melting point ranging from 114 to 116 degrees Celsius. Boiling point is 393 degrees Celsius. Chemistry, atropine is a racemate mixture of D-hyoscine and levohyoscine with most of the physiological effect due to L-hyoscine. So this is the point to be noted. ओके फाइव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वो एल हाइसोमाइन की वजह से लिवो हाइसोमाइन की वजह से है इट इज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ड्यू टू बाइंडिंग टू मस्करिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एट्रोपिन प्रोड्यूस करता है वो मस्करिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड करने की वजह से पड़ता है it is an anti-muscarinic agent the most common atropine compound used in medicine is atropine sulfate सबसे जो कॉमनली जो एट्रोपिन यूज होता है मेडिसिन के तौर पे एट्रोपिन सल्फेट है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C17H23NO3 full twice H2SO4 dot and H2O. Full chemical name ये is atropine. Application old uses when used to put atropine then and known as belladonna into their eyes is an attempt to make their pupil larger. So ये मैंने बताया जैसे नाम जो उसका है बहुत old history से है belladonna. Bella is a name of a girl, female representation and डोना इज आइज तो ये बहुत आइज की ब्यूटिफिकेशन में यूज किया जाता था बेलाडोना को और इसलिए इसका नाम बेलाडोना पड़ा है और होता क्या था व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज
when they used to apply this belladonna, उसके पत्ते को तोड़ के आँख के ऐसे जैसे हम काजल लगाते हैं वैसा लगा लेते थे, तो जो आईज की जो पीपल है वो बहुत बड़ी हो जाती थी, है ना, तो आईज का जो पीपल है वो डायलेट हो जाता था, तो उस वजह से इसको यूज किया जाता था ब्यूटिफिकेशन ऑफ आईज, दैट्स व्हाई इट हैज बीन नेम एज बेलाडोना। एंड उसके अलावा जो इसका अदर यूज है वह यूज एज डिप्रेसेंट फॉर स्टिमुलेशन ऑफ अनकॉन्शियस इंटरनल प्रोसेस, डिप्रेसेंट फॉर स्टिमुलेशन ऑफ अनकॉन्शियस इंटरनल प्रोसेस के लिए भी यूज किया जाता है ना। एंड इसके जो अदर यूज है, हार्ट स्टिमुलेंट है, अपोज द एक्शन ऑफ वेगस नर्व के एक्शन को ये अपोज करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ओके, ड्रग एप्लीकेशन ऑप्थेल्मिक यूज के लिए यूज करता है। एट्रोपिन यूज एज साइक्लोपेलेजिक टू टेम्परली पैरालाइज द अकोमोडेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड मीडियाटिक टू डायलेट द पीपल, है ना। एट्रोपिन को यूज किया जाता है साइक्लोप्लेजिक टू टेम्परली पैरालाइज अकोमोडेशन, है ना, पैरालाइज करने के लिए। जब आई टेस्ट के लिए जाते हैं, इफ यू हैव एवर गॉन फॉर योर eye test, then you must have जो यूज किया हुआ उसको थोड़ा सा जस्ट एक आइडिया होगा कि आई के एग्जामिनेशन से पहले उसको हम ड्रॉप को डाला जाता है, डायलेट किया जाता है ना। एंड द पीपल जो बेसिकली जो पीपल है, इट इज ऑल्सो यूज रिलीव पेन कॉज बाय स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज, तो ऑप्थेल्मिक यूज किया जाता है इसका। Resuscitation, injection of atropine are used in treatment of bradycardia as an extremely low heart rate, है ना। आपने सुना होगा कि you have witnessed in movies also कि atropine का इंजेक्शन है वो फाइनली बिल्कुल एक लास्ट स्टेज में दिया जाता है ना, जब बहुत ही एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया हो, बहुत ज़्यादा लो हार्ट रेट हो, है ना, तो उसको उठाने के लिए एट्रोपिन को यूज़ किया जाता है, बिल्कुल हार्ट में ही वो इंजेक्शन दिया जाता है। एसिस्टोल एंड पल्सलेस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन द कार्डियक अरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, third use, secretion and bronchoconstriction. Atropine action on the parasympathetic nerve system inhibit salivary, sweat and mucus gland. This can be useful in treating hyperhidrosis and can prevent the death rattle of dying patient. Okay, so इसका third use है इसका कि आप इसको एट्रोपिन को पैरासिम्पैथेटिक यूज के लिए यूज कर सकते हो, है ना। पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी है उसको एक्शन के इनहिबिट करने के लिए यूज किया जा सकता है। एंड इसके अलावा इसको यूज करते हैं हाइपर हाइड्रोसिस में। हाइपर हाइड्रोसिस इज अ कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल एक्सेसिव स्वेटिंग इन्वॉल्विंग द एक्सट्रीम एक्सट्रीमिटीज, अंडरआर्म्स, फेस, यूजुअली अनरिलेटेड टू बॉडी टेम्परेचर एक्सेस, है ना। तो उस कंडीशन में भी एट्रोपिन दिया जाता है जब आपको एक्सेसिव अबनॉर्मल स्वेटिंग हो, यूजुअली अंडरआर्म्स, फेस, है ना, उस केस में भी दिया जाता है। एंड एक्सेसिव स्वेटिंग हैव कॉजेज दैट आरंट ड्यू टू अंडरलाइनिंग डिजीज, है ना, बहुत सारी डिजीजेस की वजह से नहीं होता है कि आपको दूसरी अदर डिजीजेस हो तो उस वजह से यूज किया जाता है ना। दिस इट हैज नथिंग टू डू विद टेम्परेचर एज सच, टेम्परेचर है, गर्म बॉडी है, इस वजह से नहीं है। ओके, तो इस कंडीशन में एट्रोपिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गन फॉस्फेट पॉइजनिंग। Organ phosphate poisoning, atropine is given treatment of sludge, that is your salivation, the excess of saliva, lacrimation, आंसू, बहुत ज्यादा आंसू, आंखों से पानी आना, urination, diaphoresis, gastrointestinal motility, emesis, symptoms caused by organophosphate poisoning. These are the basic symptoms which is caused by organophosphate poisoning. Laboratory synthesis. Atropine synthesis involves two major steps: synthesis of atropine and synthesis of tropic acid. तो जो दो बहुत मेजर स्टेप है एट्रोपिन के सिंथेसिस में, एक तो है सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन एंड सिंथेसिस ऑफ ट्रोपिक एसिड, एंड द लास्ट स्टेप देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ tropine and tropic acid to form tropine. The very first step of synthesis of tropine, the immediate compound of succinyl aldehyde methylamine acetone to form tropinone, and tropinone upon reduction yield tropine. The second step is synthesis of tropic acid carried out via phenyl acetic acid and propyl
magnesium chloride in the presence of ether and intermediate product formation followed by subsequent treatment with H2SO4 acid. The last step is the synthesis of combination of both the product like tropine and tropic acid to give atropine by adding HCl. So this is how the step goes. Succinyl aldehyde combines with methylamine, acetone, tropinone. Then from tropinone it forms tropine. Second step, phenyl acetic acid plus your compound give ether, combination give intermediate product which forms magnesium, lactose 5-phenyl, 2-phenyl hydropune and aldehyde and dichloride. There it combined to form 3-deoxy 2-phenyl propane acid. And in the third step, when tropine combines with tropic acid to give in the presence of addition of HCl give tropine. So this is the structure of tropine. Okay, and tropine structure confirmed by the synthesis of Fischer esterification process. Isolation, there's a major part of this unit that is isolation of tropine. Tropine is a racemic form of L-hyosmine. Later can be racemized by heating with ethyl alkaline solution. Procedure: dry 500 grams of seed of plant that is Dhatura starmonium. Boil and boil the seed in water for 1.5 hours in a beaker. Strain the extract through a fine poured mess. Add 4 ml of concentrated sulfuric acid into the liquid and leave it for half an hour. Take out the clear layer of liquor with the help of pipette. Filter to obtain a transparent sherry colored solution. Add ammonium carbonate to the solution till saturation. Find color change of the solution to black from sherry. Leave to obtain leave to obtain crystals of atropine 15 to 30 minutes. Take out the upper superend with the help of posture pipette. Dry the crystals of the filter paper on the filter paper. Dissolve the dried crystals into boiling alcohol. Evaporate alcohol and obtain pure crystals of atropine. So this is the step of isolation of atropine. Okay, and these are the books from which I have taken. Thank you. So thank you for today, and I hope I'm able to explain you well how atropine can be obtained from and how can be isolated and how it can be synthesized. Thank you for sharing.